हेलो लर्नर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे जो यूपीएससी के पिछले सालों में पूछे गए हैं। लिस्ट स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, along which one of the following meridian did India experience the first length light of the sunrise of new millennium? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement. Tides are of great help in navigation and fishing. टाइड जो है नेविगेशन और फिशिंग में मदद करती है। हाई टाइड एनेबल बिग शिप टू इंटर और लीव द हार्बर सेफली. टाइड प्रिवेंट सिल्टेशन इन हार्बर. कंडला एंड डायमंड हार्बर आर टाइडल पोर्ट. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट? आंसर होगा ऑप्शन डी। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement about the roaring forties. They blow uninterrupted in the northern and southern hemisphere. They blow with great strength and constancy. Their direction is generally from northwest to east in the southern hemisphere. For overcast skies, rain and raw weather are generally associated with them. Correct answer is option number B. Option number B, correct answer. Next question. Which one of the following weather condition is indirectly by a sudden fall in barometer reading? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉर्मी. स्टॉर्मी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the who amongst the following was the first to state that the earth was spherical? आंसर होगा ऑप्शन ए, एरिस्टोटल. ऑप्शन ए, एरिस्टोटल. नेक्स्ट क्वेश्चन, if the stars are seen to rise perpendicular to the horizon by an observer, he is located in on the. आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड अबाउट सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम. फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इन्वॉल्व द weathering of pre-existing rock. Sedimentary rock contain fossils. Sedimentary rock typically occur in layer. तो आंसर होगा ऑप्शन डी. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, volcanic eruption do not occur in. करेक्ट आंसर होगा बाल्टिक सी. करेक्ट ऑप्शन होगा बाल्टिक सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फोज फ्रॉम. क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फोज फ्रॉम. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैंडस्टोन. ऑप्शन सी, सैंडस्टोन. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग. सॉइल इरोजन का करेक्ट इरोजन प्रोसेस करेक्ट ऑर्डर में सजाना है. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन, गिल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन related by temperature and rainfall of a meteorological station are given below। यहाँ पे मंथ, टेम्परेचर, रेनफॉल दिया हुआ है और क्वेश्चन है एवरेज टेम्परेचर 12.8 सेंटीग्रेड, एवरेज रेनफॉल 54.9 सेंटीमीटर पर एनम। आइडेंटिफाई द रीजन हैविंग द अबव क्लाइमेट पैटर्न फ्रॉम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, assertion during the neap tide the high tide is lower and the low tide is higher than usual। Reason, the neap tide unlike the spring tide occur on the new moon instead of on the full moon। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। A is true but R is false। Next 13 number question, sun's halo is produced by the refraction of light। Option A, water vapor is stratus cloud। B, ice crystal in cirrocumulus cloud। C, ice crystal in cirrus cloud। D, dust particle in stratus cloud। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आइस क्रिस्टल इन cirrus cloud। नेक्स्ट 14 number question, consider the following statement: ocean current are slow surface movement of water in the ocean। Second, ocean current assist in maintaining the earth heat balance। Ocean current are set in motion primarily by prevailing wind। 4, ocean current are affected by the configuration of ocean। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। 2, 3 एंड 4 राइट है, क्योंकि ये स्लो सरफेस मूवमेंट नहीं है, ये फास्ट सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इक्वेटोरियल रीजन द ईयर is divided into 4 main season। Second, in Mediterranean region summer month receive more rain। 3, in China type climate rainfall occur throughout the year। 4, tropical highland exhibit vertical zonation of different climate। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम: टैगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टुंड्रा। द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अल्बीडो वैल्यूज ऑफ दिस इकोसिस्टम इज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, assertion 60 to 65 latitude in both the hemisphere have a low pressure belt instead of high pressure। Reason, the low pressure area are permanent over ocean rather than on land। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 18 नंबर, a surface wind spiral inward upon the center of cyclone। Air descend in the center of the cyclone। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
Next question. Consider the following climate and geographical phenomena: condensation, orography, high temperature and humidity, vertical wind. Thunder cloud develop in due to which of these phenomena? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर शॉर्ट टर्म climatic prediction, which one of the following event detected in the last decade is associated with occasional weak monsoon rain in the Indian subcontinent? करेक्ट ऑप्शन होगा एल नीनो एंड साउदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो एंड साउदर्न ऑसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैगून? कौन सा इसमें से लैगून नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पेरियार लेक इज नॉट अ लैगून। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम? करेक्ट आंसर इज द अर्थ इज द densest of the all planet in our solar system. Next question, the amount of moisture in the atmosphere is related to latitude. Reason, the capacity to hold moisture in the form of water vapor is related to temperature. Correct answer A, both A and R individually true, and R is the correct explanation of A. Next, unlike temperate forest, the tropical rainforest is cleared can yield productive farmland that can support intensive agriculture for several years even without chemical fertilizer. Reason, the primary productivity of the tropical rain forest is very high when compared to that the temperate forest. Correct answer option number D. Correct answer option number D. Next question. Question number 25. Area lying within 5 to 8 degree latitude on either side of the equator receive rainfall throughout the year. Reason, high temperature and high humidity cause convectional rain to fall mostly in the afternoon near the equator. Correct option इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26. Which one among the following cover the highest percentage of forest area in the world? Temperate coniferous forest, temperate deciduous forest, tropical monsoon forest, tropical rain forest. करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 1 ए, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27. Among the following, which planet take maximum time for one revolution around the sun? Earth, Jupiter, Mars, Venus. करेक्ट आंसर होगा जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28. Thickness of the atmosphere is maximum over the equator. Reason, high insolation and strong convectional current occur over the equator. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,
A is false but R is true. Option D. Option D correct answer. Next question. Where is 29? Where is the volcanic mountain Mount St. Helens located? Chile, Japan, Philippines, United States of America. Correct option D. Correct answer D. Next question. 30. The same face of the moon is always presented to the earth. The moon rotates around its own axis in 23 and half day, which is about the same time that it takes to orbit the earth. Correct answer is option number C. A is true but R is false. A is true but R is false. Option number C. Next question. 31. Assertion: existence of human life on Venus is highly improbable. Reason: Venus has extremely high level of carbon dioxide in its atmosphere. Correct answer is option number A. Correct answer is option A. Both statements are correct. R is correct explanation of A. Next question. 32. Assertion: wind patterns are clockwise in northern hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere. Reason: the direction of wind pattern in the northern and southern hemisphere are governed by the Coriolis effect. Correct answer is A. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Next 33 question. 33 number of question. Where are Balearic Island located? Correct answer is Mediterranean Sea. Correct answer is Mediterranean Sea. Next question. Which one of the following pair is not correctly matched? Option C. Correct option C. Nicaragua Balmopan. Next question. Consider the following statement. The axis of Earth's magnetic field is inclined at 23.5 to the geographic axis of the Earth. Second, the Earth's magnetic pole in the northern hemisphere is located on a peninsula in northern Canada. The Earth's magnetic equator passes through Thumba in South India. Correct answer is B. Correct answer is B. Next. Consider the following statement. Total land area of Earth is approximately 1475 lakh square kilometer. Second, ratio of land area to water area of Earth is approximately 1:4. 3. Maximum percentage of Earth's water is in the Pacific Ocean. Which of the statement given is are correct? Correct statement is A. First and 3 statement are correct. Next. In which one of the following ocean Diamantine Trench is situated? पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, आर्कटिक ओशन में. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इंडियन ओशियन. इंडियन ओशियन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
To orbit around the Sun and the planet Mars takes lesser time than the time taken by the Earth. Reason: the diameter of the planet Mars is less than that of Earth. Code. Correct answer is option D. Option D. A is false but R is true. Next question. What is the average distance approximate between the Sun and the Earth? Correct answer is 150 into 106 km. Next question. Consider the following statement. Either of the two built over the ocean at about 30 to 35 and north and south latitude is known as horse latitude. Horse latitude are low pressure belt. Which of the statement given above is are correct? Correct answer is option A. Option A. Because horse latitude are high pressure belt, not a low pressure belt. Next. Consider the following statement. Annual range of temperature is greater in Pacific Ocean than that in the Atlantic Ocean. जो पैसिफिक ओशियन टेम्परेचर रेंज है वो अटलांटिक ओशियन से ज़्यादा है. सेकेंड, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैन दैट इन साउदर्न हेमिस्फीयर. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Option B, correct answer. Next question. Consider the following statement. Albedo of an object determine its visual brightness when viewed with reflected light. Albedo of Mercury is much greater than the albedo of Earth. Correct answer is option A. Correct answer is option A. Next. For India, China, UK, USA, which one of the following is the correct sequence of median age of their population? ये एक रिपोर्ट से पूछा गया है. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. In order of their distance from the sun, which of the following planet lie between Mars and Uranus? मार्स और यूरेनस के बीच कौन से प्लैनेट हैं? ऑप्शन करेक्ट आंसर इज बी. करेक्ट आंसर इज बी, जुपिटर एंड सैटर्न. Question number 45. Which one of the following planet has largest number of natural satellite or moon? कौन सा प्लैनेट नेचुरल सैटेलाइट और मून सबसे ज़्यादा है? करेक्ट ऑप्शन इज जुपिटर. नेक्स्ट. In the structure of planet Earth, below the mantle, the core is mainly made up of which one of the following? Correct answer is iron. Correct answer is iron. Next question 47. Consider the following statement. On the planet Earth, the fresh water available for use amount to about less than 1% of the total water found. Second, of the total fresh water found on the planet Earth, 95% is bound up in polar ice cap and glaciers,
Which of the following given statement is correct? Correct answer is option E. On the planet Earth, the fresh water available for use amount to about less than 1% of total water found. Next question. A geographic area with an altitude of 400 meters has following characteristics. If this geographic area were to have a natural forest, which one of the following would is most likely be? Moist temperate coniferous forest, mountains, subtropical forest, temperate forest, tropical rainforest. Correct answer is tropical rainforest. Option D, tropical rainforest. Next question. Next question. A new type of El Nino called El Nino Modoki appeared in this context. Consider the following statement. Normal El Nino form in the Central Pacific Ocean, whereas El Nino Modoki form in Eastern Pacific Ocean. Normal El Nino result in diminished hurricane in the Atlantic Ocean, but El Nino Modoki result in the greater number of hurricane with greater frequency. Correct answer is option number B. Option 2. Correct answer option number 2. Next question. Which one of the following reflect back more sunlight as compared to other three? ये भी सवाल एल्बिडो पोर्शन से पूछा गया है ज्योग्राफी के. Which one of the following reflects back more sunlight as compared to other three? Correct answer C. Land covered with fresh snow. Land covered with fresh snow. Correct answer is option C. Correct answer is option C. Land covered with fresh snow. आगे वीडियो में क्वेश्चंस के सारे एक्सप्लेनेशन लाइन से दिए गए हैं. आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं, जो आपको एक यूपीएससी के प्रीलिम एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगी. ये सारे आगे जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स एक्सप्लेनेशन के साथ हैं. आप चाहे तो वीडियो पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं. और आने वाले वीडियो में हम ज्योग्राफी के और भी क्वेश्चंस करेंगे 2023 तक के.